स्टूडेंट्स, सो वी हैव गॉट द टावर बाय विलियम बटलर यीट्स। इससे पहले हम लोग बहुत सारे पोएम्स ऑलरेडी कर चुके हैं विलियम बटलर यीट्स के। मैं ये सोच रहा था कि द टावर जो पोएम है इसको मैं सबसे लास्ट में करूंगा, पर मैंने सोचा नो, लेट्स डू इट इन द सेकेंड लास्ट, सो दैट यू नो दो इट्स अ वेरी लॉन्ग पोएम एंड आई वुड से इट्स द लॉन्गेस्ट पोएम। ठीक है, अगर आपको कोई ये पूछे कि मतलब विच इज द लॉन्गेस्ट पोएम रिटन बाय W.B. Yeats, यू नीड टू से दैट इट्स द टावर। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टावर। ये पोएम किस चीज के ऊपर बेस्ड है? दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ समवन गेटिंग ओल्डर। However, it's a question to others as well, that how should you be active and thoughtful while you are getting older. ओके तो पहले कुछ से मतलब इस पोएम को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेक्शन 1, 2, 3। पहले वाले सेक्शन में इन्होंने बोला है कि मतलब ये थोड़े से वरीड हैं इस चीज को लेकर कि ये ओल्ड होते जा रहे हैं, इनका कॉन्शियसनेस लूज होगा क्या या नहीं होगा, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, सेकेंड सेक्शन में ये पूछते हैं दूसरों से जो इनकी लाइफ से पहले आ चुके हैं, उनसे ये पूछते हैं कि हाउ टू लिव द लाइफ एंड you know when you are getting older, how would be the experience and how to be active throughout the life and be creative as well. और थर्ड वाले सेक्शन में ये एक्सेप्ट करते हैं अपने ओल्ड एज को, और साथ साथ में ये एक्सेप्ट करते हैं किस चीज को? डेथ को। द डेथ विच इज एनी विच वे विल कम, आएगा ही आएगा, उस चीज के बारे में, उस चीज को ये एक्सेप्टेंस में लेते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन द टावर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम्स, वन ऑफ द मोस्ट थॉटफुल पोएम्स एक्चुअली। ठीक है, बहुत ही लंबी पोएम है। यू नीड टू कीप अ पेशेंस एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई विल डिवाइड इट इन नंबर ऑफ वीडियोस, दिस पर्टिकुलर पोएम। सो द फर्स्ट पार्ट विल गो टू द इंट्रोडक्शन, द सेकेंड पार्ट जो है हमारा समरी, इंट्रोडक्शन एंड फॉर्म, किस टाइप का पोएम है ये। सेकंड में हम लोग जाएंगे समरी कर लेंगे, और थर्ड में हमारे 3 सेक्शंस हैं, और हर सेक्शन में हमारे कहीं पे पहले वाले सेक्शन में हमारे पास 2 स्टैंजास हैं, दूसरे वाले सेक्शन में हमारे पास मतलब कुछ 6 या 7 स्टैंजास हैं, देन वी हैव गॉट मोर नंबर ऑफ, टोटल देयर आर लाइक 17 to 18 स्टैंजास ऑल टुगेदर। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड दिस इनटू 6 to 7 पार्ट्स ऑल टुगेदर, so that when you are listening to one video, you don't have to sit throughout the video. It can be a short video of like 5 to 6 minutes, 7 minutes, so you can focus on one particular video, and in a very similar way you can follow up with all other videos that would be put for you. Okay, and it would be easier for you to complete the poem rather than getting bored out of it, because the poem is any which way very lengthy. There would be people who will get interested in the poem and listen to it in one go. However, there are people who may get bored, and the people who are actually getting bored would not be able to follow up on each and every video one after another, or can watch through in one stretch. For that reason, what you just need to do is you need to watch one video with concentration, take notes, and then leave it. Whenever you are feeling comfortable, then you need to come and watch the another video. This is how you have to follow up for this poem, and any subject you have to do the same thing. Focus for some time. Okay, don't get distracted, focus for some time on one particular thing, take notes, be comfortable. Okay, and when you are when you think that you are getting little bored out of it, stop it, and then start once again when you are really feeling fresh of it. Okay, this is how you need to study. So let's start the Tower by William Butler Yeats, and the introduction we'll go through. Okay, let's go ahead. तो इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शन क्या है? द टावर इज वन ऑफ ईट्स वेल रिसीव्ड पोएम्स। वेल रिसीव्ड पोएम्स, ठीक है, बहुत माना गया था ये पोएम। रिटन ड्यूरिंग हिज मैच्योर्ड पीरियड, जब ये एज्ड हो गए थे तब ये लिखा था। इट इज द लॉन्गेस्ट पोएम रिटन बाय द पोएट। इट वाज रिटन इन 1926 में लिखा गया था, एंड वाज द टाइटल पोएम ऑफ द कलेक्शन दैट पब्लिश इन 1928। तो 1926 में लिखा था, 1928 में पब्लिश हुआ था। पोएम का जो कलेक्शन का नाम था, वो कलेक्शन का नाम भी द टावर था। ठीक है, पोएम के कलेक्शन का नाम भी द टावर था। ओके, इट इज अ पावरफुल पोएम दैट टॉक्स ऑफ हिज डिटीरियरेटिंग फिजिकल हेल्थ एंड हिज ग्रोइंग पैशंस इन पॉलिटिकल एंड पर्सनल लाइफ। तो ये पॉलिटिकल एंड पर्सनल लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा है इनके थॉट प्रोसेस में, उस पे रिलेटेड है ये पूरा का पूरा। इट्स अ वेरी पावरफुल पोएम, ओके, दैट टॉक्स ऑफ हिज डिटीरियरेटिंग हेल्थ एंड ग्रोइंग पैशन इन पॉलिटिकल एंड पर्सनल मैटर्स। फाइन,
Next, the tower is Yeats' first major collection as a Nobel laureate after receiving the Nobel Prize in 1923. आप ये देखो 1923 में इन्होंने नोबेल प्राइज लिया था। नोबेल प्राइज लेने के बाद इनका पहला सबसे बड़ा कलेक्शन था पोएम्स का। 1926 में इन्होंने ये पोएम लिखा और 1928 में ये पब्लिश हुआ। ओके, 1923, 1926, 1928. Okay. So, the title of the poem and the book referred to Bailey Castle. अभी the tower जो है, ठीक है, मैं तो इस poem itself को tower बोलता हूँ क्योंकि ये इतना लंबा poem है. But coming back to this, what he's actually referring to is Bailey Castle. अभी बाइली कैस्टल जो है ये इन्होंने 1917 में खरीद लिया था और इसको पूरा का पूरा इन्होंने रीफॉर्म कराया था. ओके, ही पर्चेज्ड एंड रीस्टोर्ड इट इन 1917. इस बाइली कैस्टल को रेफर कर रहे हैं वो द टावर से. ओके, द टावर साउंड्स लाइक अ कंपेनियन पीस ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम. कंपेनियन पीस क्यों? कंपेनियन पीस, अभी हर चीज से आप क्वेश्चन बना सकते हो कि द टावर को, और मैं इसी तरह क्वेश्चंस भी पूछूंगा अपने एग्जामिनेशन में, जैसे टावर की बात हम कर रहे हैं तो विच पोएम इज गेटिंग रेफर्ड एज अ कंपेनियन टू द टावर. Okay, so this poem is referred as companion piece to sailing to Byzantium. ठीक है, every line that I am giving creates a question there. Okay, so it's not that कि मतलब मुझे you need to focus on MCQs because how many MCQs can be made out of the subject? The subject itself is important. Okay, each and every line is important, and I think you need to remember each and every line rather than going through MCQs. MCQs are the result of what you have studied. What you have studied, it's the result of it. It's not the subject itself. Okay, so MCQs always come later. The most important part is what you have in the subject. You need to study that first. So this is the clarity that you have got. Everything is fine here, and we have already completed this section, which is introduction. Let's move on to the another section. And when I talk about section, is the section of the PDF itself, not the poem, because the poem is divided in 3 sections, and that's a different thing we'll be talking about. So coming back to this form, let's talk about form then. The form, the tower, okay, in the form, the poem, the tower doesn't follow any set for. It's not following any set for. So ये कोई मीटर फॉलो नहीं कर रहा है, ये कोई मतलब iambic form या फिर कोई स्टाइल, प्रीवियस स्टाइल, ये सब कुछ फॉलो नहीं कर रहा. It's a very lengthy poem. ठीक है, no meters and nothing of that sort is followed, but there is a kind of rhyming that has been followed, and we have already mentioned the rhyming part here. Okay, so the poem, the tower, doesn't follow any set for. कोई set follow नहीं कर रहा है. The lines and the stanzas are written in various lengths. ठीक है, अलग अलग लेंथ में लिखे हुए हैं. Structurally, the poem is divided into 3 sections. 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट सेक्शन जो है, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट सेक्शन जो है, it comprises of 17 lines. Okay, it comprises of 17 lines, serves as an exposition. Okay, exposition talking about the poet's discomfort over becoming old. ठीक है, तो पहला वाला सेक्शन है, इसमें ये मेंशन कर रहे हैं उनका डिस्कम्फर्ट कि वो ओल्ड हो रहे हैं. ओके, दिस इज अबाउट द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द poem. First section has got 2 stanzas there. The second section comprises of 13 8-line stanzas. Okay, 13 8-line के stanzas है. 13 ये हो गया, पहले वाले में 2 हो गया, और मेरे ख्याल से लास्ट वाले में 4 है. तो टोटल वी हैव गॉट 19 stanzas in the poem. ठीक है, तो पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 13 है, तीसरे वाले में 4 है, टोटल 19 है. Now, 13 8-line stanzas validates and questions the life of people who lived before him, like in his other poems, Byzantium and Prayer for My Daughter. Okay, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो किस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे बाइजेंटियम में इन्होंने ओल्ड एज को क्वेश्चन किया था, और न्यू एज के बारे में इन्होंने मेंशन किया था कि व्हाई न्यू एज इज इग्नोरिंग द ओल्ड एज एंड आई नीड टू मूव टू सम अदर प्लेस वेयर इन आई एम रियली वैल्यूड. ठीक है, ये इन्होंने बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम इन्होंने किया था, विच इज अ कंपेनियन पोएम टू द टावर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन द इंट्रोडक्शन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बाइजेंटियम में इन्होंने क्या डिस्कस किया था, यू वुड हैव ऑलरेडी रेड दैट.
बाइजेंटियम आपने पढ़ लिया होगा, तो इस बाइजेंटियम में उन्होंने उसकी मतलब वहां की रात को मेंशन किया है कि हाउ द स्पिरिचुअल लाइफ बिगिंस एंड व्हाट यू नीड टू डू फॉर दैट। प्रेयर फॉर माय डॉटर में इन्होंने अपनी बेटी के लाइफ के बारे में और उस तरह से एक यंगर एज के बारे में कंसर्न शो किया है कि हाउ शी कैन इन दिस ग्रोइंग डिफिकल्ट वर्ल्ड हाउ शी कैन प्रोग्रेस इन हर लाइफ। ये वो क्वेश्चन है प्रेयर फॉर माय डॉटर में। इन द सेकेंड सेक्शन ही फॉलोड द राइम स्कीम ऑफ AABBCCDDC। ये वाला राइमिंग स्कीम उन्होंने फॉलो किया है। द थर्ड सेक्शन विच कंप्राइजेस 4 स्टैंजास ऑफ वेरियस लेंथ्स expresses the poet's passive approach and acceptance to old age and death। ठीक है, सेकंड में उन्होंने फोकस किया है डिफरेंट क्वेश्चंस। ही हैज क्वेश्चनड others who have come before him in this life, and in the third section he is accepting the old age and death। Okay, so the form has been followed here. This is what the form has been followed here. Now let's end the video here and we will go through the summary of the poem in the second video. Thank you so much.